Panchang Puja means 5 limbs of. Now 5 limbs of puja, when we talk about the most important 5 things which we have to do while we are performing the puja. Definitely I said 5 limbs of. Now 5 limbs of puja. So the Panchang Puja, look at me. That is more important. Don't look at there. I'm not going to change this slide today. We'll always be on this slide and only. So Panchang Puja जो है ना, उसका जो खास बात है वो ये है कि that's all about preparing yourself to do the puja. The most important thing is Abhigaman. That's the first step. What is the meaning of Abhigaman? Can anybody tell me? Abhigaman. What prepare? जबरदस्ती ये मेरे साथ है मेरे 3 साल से. Abhigaman means preparing yourself to go to serve the Lordship. Means when you get up from your bed, first thing which you do is what? Guru, Gurang and Radha Krishna. Yes, we do worship the Prithvi Devi. But more important than that is remembering Guru, Gurang and Radha Krishna. So you say the mantra called Guru Gaur Chandraya Radhikaye. बंद कर सर बंद कर सर बाद में गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. गुरुवे गौर चंद्राय मीन्स गुरु और गौर चंद्र. राधिकाएं मतलब राधा रानी और राधा रानी के एसोसिएट्स. सही है. कृष्णा एक कृष्ण भक्त है, कृष्ण और कृष्ण के भक्त एंड तद भक्त है उनके भक्तों को नमो नमः. So when you are doing a pranam, you don't have to take the name of everybody. When you know this particular mantra, you can chant and you can be obviously to everybody. ठीक है. So Abhigaman means getting up in the morning, right? Once you get up, you remember Guru Gurang Radha Krishna. Then what do? You go to the washroom. Then you brush your teeth. Then you take shower. You know what is the meaning of taking shower in Kali Yuga? Purification from outside only. And how will you purify yourself internally? Very good. Actually, you should be chanting the mantras also. You should be chanting, you know, Gange Jamuna Chaiva Godavari Saraswati. When you chant this mantra, you actually call all the rivers. Right? So all the rivers you're calling and then you're taking bath with that. And then you're saying, Om Apavitra Pavitro Va. Oh, this is why? Om Apavitra Pavitro Va. Sarvavastham Gato Piva. Yes, Maret Pundari Kaksham. Sabhayavantar Shuchi. Om Pavitra Pavitrova, no matter what condition of state I am, पवित्र हूं या पवित्र हूं, सर्वावस्था में तो विवाह किसी भी अवस्था में. लेकिन जिस मोमेंट हम लोग भगवान की आंखों का स्मरण करते हैं,
हम लोग internally or externally we get purified. So you should know the mantras actually. We every morning chant Mahaprasade Govinde Nam Brahmani Vaishnavi. You know what is the meaning of this slogan? You know, when I learned the mantra's meaning, when I learned the mantra of this particular, when I learned this particular mantra and the meaning, I had stopped chanting this mantra. And as soon as Prasadam used to come in front of me, मैं बोलता रहा Mahaprasad, Govind, Nam, Brahman or Vaishnav. They are all situated on the same platform. And the man who does not have enough punya karmas, he cannot have faith in either of them. He cannot have faith in either of these things. Mahaprasad, Govind, the name of the Lord, Brahman and Vaishnav. So when you start remembering the meaning of the mantras, it will start giving you such an amazing feeling of understanding what you're doing. That's why I always emphasize on the meaning. Your same thing comes to Guru Tattva. Oh, my Guru Maharaj is a very good Kirtaniya. My Guru Maharaj is a very good speaker. Oh, my Guru Maharaj is a very good teacher. Oh, my Guru Maharaj is very well versed. Oh, my Guru Maharaj is this, my Guru Maharaj is that. But when we have this such kind of understanding, it's a very external understanding of your Guru. जैसे कि दो wires होती है ना, wires. When you're connecting the wire, without feeling the rubber, it will not help you to flow the current. To get the current, we need to understand my Guru Maharaj is actually the Nitya sir. He's a Nitya servant. He's an eternal servant of Krishna. And I'm the eternal servant of my Guru Maharaj. Right? So such understanding is the proper understanding. Got it? And this is what exactly I'm trying to tell you here is, whatever we are performing in Krishna consciousness, unless we have the proper understanding, we will not be able to relate to it. समझ में आया? हिंदी बोलो, इंग्लिश ठीक है ना? ठीक है? तो यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभार्यावहंतर शुचिः. So when you're taking a shower and chanting these two mantras, you are actually taking bath. I've heard in one of the statements, in one of the scriptures it is written, in Kali Yuga people will be so much degraded that just by taking bath with the water, they will consider themselves clean. How do we get clean then? By bathing with the mantras. That is the most essential thing. We get actually purified when we bathe with the mantras. Okay? After that, we wear dhoti, kurta, and everything, and then we go to the temple. Abhigaman comes to that level. Okay? We put also tilak on our body, right? है ना? क्या हुआ? हाँ? 12 tilaks we put on our body. है ना? केशवाय नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय विष्णवे मधुसूदनाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, वामनाय श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय नमः. Yeah. So we chant these mantras and we actually place the Lordship on our body. It's placing the Lord on different part of our body to make our body purified. ये जो मंत्र है ना, ये तिलक बनाते हैं हम लोग. It's actually the temple we are making on our body. Tilak, you have to understand. Om Keshwaya Namaha. A Suhagan Istri is always Suhagan. But why is she putting the bindi here? That bindi na, like irritates you. Irritates you.
Sometimes when I put the bindi, if you go to any Mataji Mandir, Mata Rani Mandir, and you pay obviously they will put like रोल इधर भरी हुई बिंदी और एक बहुत बड़ा टीका लगा देंगे जब वो टीका सूखेगा ना तो यू क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग टू मी होता है थोड़ा इरिटेशन होता है ना हल्का हल्का but that irritation will keep you intact in your mind that what you are you went to Mata Rani Mandir. So Hagar is always putting a bindi which is kind of irritating in one way but actually is making her realize that she is a married woman. To remind her that she is married. Right? Same way. When we are putting the tilak on our body with the mantras, I told you yesterday also, we have 9 holes in our body. And anytime you put your hand in your ears, you sneeze your nose, you spit, you go to washroom, you go to dumping, anything, anytime. All the time your body is releasing shit out of your body, right? All these 9 holes, eyes also, right? Every morning you see something in your eyes, right? What is it? It's a waste. Then we have so many pores on our body. Pasina, sweating, Yeah, anyone impure. We're not pure. We are not pure physically to serve the Lord. But these are mantras when we chant, placing the Lord on our body, different parts of our body. We make ourselves ready for that. Okay? So abhi you prepare yourself to either go to the altar which is there in your house, or you prepare yourself to go to the temple. Right? Now as a pujari, the second thing comes, that is upadana. What is it? Upadana. Upadana means collecting the paraphernalia for the worship. In upadana, what do? Go. Phone kar rahe hain? In upadana, what happens? You go to the temple. Have you seen the pujaris, what they are doing? They are collecting the paraphernalia, dates, arati plate. First they have to collect, things to wake the Lordship up, right? And then doing the upachar. First upachar, the morning upachar for the Lord. First you wake up your Guru. Your Guru is always awake before you. But still you have to wake up your Guru, right? But your Guru is always awake before you. Then we wake up Mahaprabhu. ठीक है उत्तिष्ठ मैं आपको पूरे मंत्र सुनाऊंगा ठीक है we'll have a class especially on mantras 2-3 classes ठीक है कि आज निद्रा कृपा में अपने गुरु को उठाया फिर महाप्रभु को उठाया फिर राधा कृष्ण को उठाया ठीक है उसको उठाने के बाद उनको जैसे हम उठते हैं हम उठ के क्या करते हैं ब्रश टीथ करते हैं ना तो दंत काष्ठ बोलते हैं क्या बोलते हैं दंत काष्ठ तो लेकिन उसके लिए सब पैराफिनल तैयार करना दैट इज कॉल्ड upada. Collecting the bhoga, preparing the plate for the aarti, putting water, putting the clothes for the aarti, putting the flowers for the aarti, right? Preparing the chamara, then preparing the pankha, preparing the fan. Okay? So that is called upada. In fact, when we are collecting money for the temple, that also falls in the category of upadana. Anything which is you're collecting for to facilitate the puja of Lordship is what? Upadana. ठीक है बताया यहाँ पे मॉर्निंग में गंगे जी हमने चैवा टेकिंग बात ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम मुक्ति वा यस परिपूर्ण विकाक्षम जब आया बहंतर शुचि ही Then practicing after taking bath is tying the shikha. Sometimes I've seen the devotees, they just leave the shikha open. You should always open our shikha
when we go to the washroom, or when we go to any cremation, when somebody dies, right? Right? And after that, when we are taking a shower, there are two ways to tie Dishika. Some people they just tie by saying Om. And the Brahman initiated devotees they chant sometimes Kam Gayatri. Then putting on one's clothes, definitely. Then, you know, what is Ankush Mudra? Ankush Mudra. This is called Ankush Mudra. एक बड़े से बड़ा हाथी can also be controlled with his अंकुश. You know, हाथी को अगर लेफ्ट ले जा रहा हो तो जो महावत होता है वो यहाँ पे उंगली चुपाता है, राइट ऐसे उंगली चुपाता है. तो जो हाथी का ऐसे मुंह करेगा तो हाथी ऐसे चलेगा, ऐसे करेगा तो ऐसे चलेगा. तो घोड़े को दौड़ाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, यू टू किक इन स्टमक एंड देन जो हमारी लगाम होती है उसको हम ऐसे लेफ्ट करेंगे तो घोड़ा वहां जाएगा, राइट करेंगे तो राइट जाएगा. एक बार वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी मैंने हाउस राइडिंग when I was a kid, 7th or 8th grade. So Ankusha Mudra is a very special mudra. We take our Brahman thread. If we have 1, 2, 9. Actually, एक हो गया, 2, 9. And then we put it on the water like this. You have to make sure that the nails are not touching the water. As soon as the nails are touching the water, it contaminates the water. Juice, honey, ghee, any bhoga. Pardon me. This is. Put the tip on the top of it and say, Sakte hoye, Gangeti Yamune Chaiva, Godavari Saraswati, Narmado Sindhu Kaveri, Jalisman Kimchi. And then you make this mudra like this, and then you take water. Om Keshwaya Namah. Again. Om Narayana Namah. Yeah, you have to wash. Only if you're drinking water like this. Yeah, but this is the Brahma Tirtha. When you're putting a water here and drinking like this, it doesn't get contaminated. The hand is not juta. You're putting like this. You see, every time there's a different way to do it. Like sometimes we take like this. Sometimes we sometimes we are doing this thing. Asma like this also. Om Keshwaya Namah. As normally ये अलग होती है. South India में they do like this. Keshwaya Namah, Narayana Namah. Yeah. Become like this. And when you're chanting the Om Keshwaya Namah, come when people they do Om Keshwaya Namah. Nahi. First you have to chant Om Keshwaya Namah, looking at the water. Then the water gets purified or energized or abhimantrit with the mantra. And then when you're sipping it, बालू ये ऐसे हो रहा है. You know? हाँ. केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. Then applying the tilak on the body, right? हाँ, कोई बात नहीं. ये आचमनी है. आचमनी पात्र होता है, आचमनी मुद्रा होती है और आचमनी विधि होती है. नहीं होगी. That's how you put the tilak on your body. You can see. This is आचमनी मुद्रा. समझ में आ गया? This or this. ये चंडामृत. This is for चंडामृत. देखो अगर इस उंगली को हम लोग ऐसे करेंगे
थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा वो गुड्डा बन जाता है। डिपेंड करता है, देखो मेरे हो जाती है। ठीक है, एक साधारण आसमन होता है और एक क्या होता है, विशेष आसमन। साधारण आसमन इज ओनली केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः, फिर विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, फिर ऋषिकेशाय नमः। फिर पानी लेके पैरों में पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वसुदेवाय नमः, संकृष्णाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निधान पुरुषोत्तमाय नमः, जोक्षाय नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः। हरि बोल। ठीक है, दैट इज द आसमन। Unless you do ashman, you cannot perform any service in the altar or in the temple, or any service to Krishna is not there. वही तो प्यूरिफिकेशन है ना। नहीं, जब when we are chanting the mantra, ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। हाँ, I'm saying you are not doing it, but Vishesh Ashman is there, and then we have the special Ashman. Even with taking bath, you cannot consider yourself. Just by bathing, you cannot consider yourself pure. You need to have like. हाँ, साधारण you have to साधारण आचरण only because you are not Brahman initially. ठीक है, अब किसी भी नदी में जाते हैं, we go to any river, before getting into the river, what we do? We first pay obeisances, then you take the water in your hands, wash your both the hands, then again you take the water of Keswara Namah, Om Narayana Namah, Om Madhava Namah, Om Govinda Namah बोल के दोनों हाथ धो के, then you purify, go inside the water, right? So it's all about purifying your consciousness. ठीक है, तो ये हो गया साधारण आचमन। अब इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, नहीं, ये जो हम लोग पंचांग पूजा कर रहे थे, तीसरी चीज आती योगा। क्या आता है? योगा। हाँ, तो योगा के अंदर, योगा का मतलब होता है यू हैव टू प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस नाउ। योगा का मतलब है कनेक्शन। क्या होता है? तो योगा मीन्स कनेक्टिंग योरसेल्फ टू द लॉर्ड। So when we are chanting these mantras, है ना, तो we chant our mantra, केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, है? This is भूत शुद्धि. What is it? So after chanting केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, then we chant Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Diveva Chakshuratam Tad Viprasa Vipannava Jagroham Sam Samidhanti Vishnu Yad Paramam Padam। इस पर्टिकुलर मंत्र का मतलब हुआ कि जो जैसे सूर्य की रोशनी में सब कुछ आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार जो What's wrong with you? So, हाँ, जैसे दिखाई देता है उसी तरीके से जो व्यक्ति डिवोटेड होता है और जो स्पिरिचुअली सिचुएटेड होता है, he can see the abode of the Lord all the time. ठीक है, समझ में आया? तो भूत शुद्धि is before we start the puja, we should always do bhuti shuddhi. I am by nature the eternal servant of Krishna, but because of my bad fortune, I have been inimical towards him from time immemorial. Thus, I have identified myself with his body, continuously wanted to settle the birth and death, suffering the burning threefold miseries. Now, as a result of some unimaginable good fortune,
Srila Prabhupada's mercy, Srila Gurudev's mercy has enabled me to know that I'm infinite spiritual being, completely apart from this gross of the body. So I obtained a good fortune to serve his lotus feet and follow in his footsteps. I obtained a good fortune to serve Shri Gaunitai, Krishna Balaram, Radha Madhav, Jagannath Baladev Subhadra ki jai. So this is called Bhuta Shuddhi, purifying your consciousness. तो इसके बाद ना हम विप्रो बोलो ना च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर् नो वन स्थितो यतिर्वा किंतु प्रोजन निखिल परमानंद पूर्णामिताब्धे गोपेर भतुर पद कमले और दास दासानुदास। तो क्या बोला है, ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं तो केवल भगवान के जो गोपियां है ना, गोपियां भगवान की दास जो है, दासी गोपियां है। गोपीर भतुर पद कमलियों दास दासानु। Myself only as a servant of the servant, the lotus feet of Shri Krishna, the maintainer of the gopis. He is like an ocean of nectar and he is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. लग रहा है बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे यार इतने एग्जॉस्टेड हो गए तुम्हारे क्लास में पूरा सीधा हट सीधा हट सीधा हट। इतनी ठंड नहीं, जैकेट पहनने की जरूरत है। You wash your face, you will be much better. Look, I am telling you, don't waste your time. If you don't want, not interested, go out of the class. I don't really care. प्रभुपाद कहते हैं एक डिवोटी बन जाना बहुत है। मैं कहता हूँ एक ब्राह्मण बन जाना आप में से मैं बहुत है। बता रहा हूँ मैं, I don't really need you if you're not properly situated. Okay, I can understand you're tired. You all get up at 4 o'clock in the morning. You had a long day. Still, in the class, try to understand. We are trying to prepare you to see the Lord, to meet the Lord, to associate with Him. Right? So all these things will be possible if you listen to this class content. ठीक है, this is विशेष आचमन. And after Vishesh Ajman, some people they do the Sandhya Vandan. Anyways, that is yoga. It's a part of yoga. Yoga के बाद आता है इज्या. क्या आता है? Ijya is actually means you are actually executing the devotion service. क्या कर रहे हो? Actually, you are executing the devotion service. ठीक है? उसमें क्या क्या आएगा? अब जब हम लोग इज्या की बात करते हैं, अभी बोल इज्या मीन्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। इज्या मीन्स षोडश उपचार पूजा, षोडश उपचार पूजा और दश उपचार पूजा और पंच उपचार पूजा। तीन तरीके के उपचार होते। Shodas means 16. If not 16, at least 10. If not 10, at least 5. Right? एक बात ध्यान में रखना, कई लोग क्या सोचते हैं आरती का मतलब क्या होता है? पूजा। नहीं, आरती is just a part of it. The nitya karma is puja. When you will die,
You will be remembering the Lord. You will be remembering how did you worship His devotees, how you worship the Lordship Himself. You will remember how you have executed the devotional service. है ना? आरती तो sometimes we perform, sometimes we are not able to perform. Right? जैसे marketing होता है ना, marketing. When you will study commerce, you will get to know in marketing what they do. They design a product, then they do the survey, then they launch the product. They do advertisement, then they do storage, they do transportation. Then it goes to the retailer, wholesaler, retailer, then the consumer, and after the consumer, customer care services. Services. Good sales services. All these things are part of marketing, and sales is just a part of it, right? Sales is only when it's happening between either the wholesaler or retailer. Sorry, there's an organization to wholesaler, distributor to wholesaler, wholesaler to retailer, or retailer to the consumer. है ना? थोड़ा सा part है, right? उसी तरीके से आरती जो है ना, आरती क्या है? It's just a part of the devotion, but it's not the puja. Puja is different. ठीक है? So execution of devotional services is yeah. And the fifth thing is स्वाध्याय. वापस जाऊं या ऐसे ही है? ठीक है. ये जो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो स्वाध्याय. ठीक है. Swadhyay means studying your books, reading the scriptures. अगर ऐसा पुजारी करांगा तेरा तत्व सिद्धांत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तेरे को कभी भी कोई भी जोम बना देगा. कैसे? जो परफॉर्मिंग होमा कोई आगे बोलेगी ये क्या जो चावल इस्तेमाल कर रहा है, ये बोल सीधा बैठ ना, सीधा बैठ. मैं ज्यादा खाना नहीं खाते, कोफ्ते वोफ्ते की सब्जी बनती है तो, है ना? ये 25 कोफ्ते एक साथ. ठीक है, यू कैन वॉश फेस इफ यू वांट. ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चावल है, चावल में हल्दी मिला दी. चावल में हल्दी मिला के क्या बनता है? अक्षता. Unless we have akshat, we cannot give the seat to like the kalasha, to the Ashman Patra, to the like when we're doing when I'm doing a yajna or when we're performing a puja, each and everything we worship. First we worship the flowers. Yeah. After worshiping the flowers, first we ask for the forgiveness and take the permission from Mother Earth. And I'm sitting, Tom Dharaye Mam Nityam. मैं हमेशा तुम्हारे पर बैठा रहता हूँ. पवित्रम च आसनम गुरु. प्लीज इस आसनम को प्योर करो. फिर हम लोग घंटी की पूजा करते हैं. सर्ववाद्य मयि घंटे देव देवस्य वल्लभे त्वाम वीणा नैव सर्वेषाम शुभम भवति शोभने. अब जितने भी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर एक साथ बजना शुरू हो जाएगी ना तो जो घंटी की आवाज आती है ना वो सामने. सर्ववाद्यमयी घंटी, सारे के सारे वाद्यों के अंदर जो साउंड है वो घंटी के अंदर होती है. And suppose if you are chanting any particular mantra and we are not chanting the mantra properly, the घंटी का साउंड होता है, it fills the gap. It does? Fills the gap. आओ महेंद्र बैठो. ठीक है. It fills the gap or it nullifies the dosha. Then the deep
which we are offering to the Lord. We do the Deepa Sthapana. Huh? So all these things will come to you when you do the स्वाध्याय. अभी तक तो डीटी वर्शिप क्या लगता है? पुजारी जो पढ़ा लिखा नहीं है, पुजारी बन गया, है ना? लेकिन पुजारी का स्वाध्याय अगर नहीं होगा तो ज्यादा टाइम पुजारी की सेवा कर नहीं पाएगा. हाँ, ट्रू एक्चुअली. जो आप नहीं कर पाते वो पुजारियों की जो स्वाध्याय होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. और पुजारी जब भी सेवा करता है वो हमेशा कॉन्शियसनेस में सेवा करता है. रिलैक्स भास्कर, रास्कल, ठीक है. तो इस तरीके से व्हाट वी डू द पंचांग पूजा. ठीक है. पंचांग पूजा के बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आएंगे. अभी तो कोई डाउट है किसी में? जैसे आपने बोला कि विद्या में भी बोल लगता है एग्जीक्यूशन और डिवोशन. तो मतलब अगर हमने ये 5 चीजें कर ली या 10 कर ली 16 कर ली हमने अपने सर्विस कर नहीं, बट 5 मतलब विद्या के अंदर पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा होती है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट नाउ. अभी तो हमने 5 चीजें देखी. अभिगमन. अब अभिगमन का मतलब समझ में आ गया कि कैसे नहाना है, कैसे तिलक लगाना है. कितने लोग तिलक लगाते हैं पूरी बॉडी में? पूरी बॉडी में शर्म आनी चाहिए लोगों को. पानी ले इतना चुल्लू भर के धूप के मर जाओ उसमें. कैसे लगा सकते हैं? लगाते हैं ओम पद्मवाय नमः और दामोदराय नमः. उल्टे हाथ से लगाते हैं. देखो, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः. फिर आप तिलक लेके अपने यहाँ पे लगाओगे. ओम मधुसूदनाय नमः. फिर तिलक लेके यहाँ लगाओगे. त्रिविक्रमाय नमः. फिर लेके अपने हाथ में वामनाय नमः, कृष्णाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, तद्भवाय नमः, दामोदराय नमः, सुदेवाय नमः. तिलक है किसी में? तिलक है, तिलक है, तिलक इधर होगा देखो. हाँ हाँ, सुनो, सनातन गोस्वामी बात हरि बोल. सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति तिलक के बीच का हिस्सा साफ नहीं करता ना, वो एक तरीके से कुत्ते के पैर के समान है. कुत्ते के चरण तुमने अपने सर पे रखा. बीच वाला पार्ट The beach वाला part has to be clean. कुत्ते के पंजे की तरह सिंगल चालते हैं. बहुत सिंपल है. हमें 15 मिनट इसके एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. ऐसे ऐसे जब ये वाला पार्ट करो ना नीचे वाला तो उसे और पतला कर लो, इजी रहता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बस मंत्र पढ़ने हैं. मंत्र पढ़ के तुम आराम से कर सकते हो. सुनो, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो एक लाइन डाल दो. या कोई स्टैंड भी तो कर दो. स्टैंड स्टैंड खरीद लो. स्टैंड खरीद लो. हाँ, पानी डाल लो. पानी डालो. अरे रात को नहीं बनाना पानी. इसका लाइव बिल्कुल. देखो, पानी लाया. गंगे जी यमुना चैवा गोदावरी. अरे अगेन, ठीक है. गंगे जी यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदो सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. अगर आपके पास आसमान का नहीं है, फिर ऐसे लिया पानी आपने. ललाटे केशवम न्यायम नारायण वसुंधरे वक्षस्थल मागनम तो गोविंद कंडू के विष्णु ने दक्षिणे बाहु चमत सुनना. इस तरीके से नहीं होना चाहिए. कभी भी नहीं होना चाहिए कटोरे में. आई एम वेरी अगेंस्ट दैट. वी शुड नॉट हैव
तिलक रेडी। अगर ऐसा है भी, इतना सा लो पानी हाथ में, पानी लेके उसमें मिलाओ और फिर हाथ में तैयार करो। बेसिकली कटोरे में गीला रखो, उसमें से निकाल के अपने हाथ में ले लो। ओम केशवाय नमः। हो गया? एक बार दबा के लगा। फिर उसके बाद जब नारायण नमः माधव कोई ना होता, अब उसके ज्यादा बलवे में एक तरीका होता है, ऐसे बनाया नाक नीचे करें। नाक ऊपर कर दी। नहीं ऐसे क्यों हो रहा है? It's not that big. मैंने क्या किया, ये लिया, ठीक है, और उसको ऐसे आपने नाप लिया। या फिर उसको और अच्छे से बनाना है, वैसे बना सकते हो। बस खत्म। नहीं है। उसको ऐसे लिया, तो ऐसे मार दिया। मुझे लगाने को अब तो इसको सुखाना पड़ेगा। अगर वो फिट भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, तुमने मंत्रों से अपने भगवान को बॉडी पे ऑलरेडी स्थापित कर दिया है, ठीक है। नहीं आएगा तो वायरल बात नहीं यार, भाई इतना लेट तो देखा आप लोगों ने, समझ में आया? दिस इज वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और आखिरी में और इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज सोच से आप बोले सकते हैं, स्टैम्प लेके लगा सकते हो। आई हैव नेवर यूज्ड इट इन माय लाइफ एंड भगवान से प्रार्थना करूंगा मुझे कोई जरूरत ना पड़े, लेकिन लगा सकते हैं। कभी गलती से भी अगर चंदन गिर जाए, तिलक गिर जाए, सबसे पहले हमें तिलक को साफ करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मंत्र है जो गोपियों के चरणों की रज है, जैसे भगवान ठाकुर जी के चरणों की रज है। तो वह सारी गोपियां मिलने के लिए द्वारका गई थी कृष्ण से, और वो सारी की सारी जो गोपियां थी, योग माया ने क्या किया, सारी की सारी जितनी भगवान की रानियां थी उनको सुला दिया। भगवान गए, भगवान ने जाके गोपियों के साथ एक कुंड में जो है नृत्य किया, डांस किया, और उनके जितने मेकअप था वो सब कुछ इसमें धुल गया। और वही जो मिट्टी है वो द्वारका के उस पर्टिकुलर पॉइंट की मिट्टी है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोपीचंद, ठीक है। तो अगर ये गलती से जमीन में गिर जाए, should immediately wipe the down part first, right? No? हाँ, तो तिलक को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, दीवार में तो बाद में पोंछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पोंछना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सिर्फ तुम्हें अपने सर में लेके ऐसे करना चाहिए। ऐसे लो, जो घुला हुआ रखा हुआ है थोड़ा सा लो, हाथ में रख के थोड़ा पानी डाल के ऐसे से घोल लो, और फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधव नमः, गोविंदा नमः, विष्णु नमः। Forget it. We are not going to here. We are not here to point out to the fault. ठीक है? Okay. So whenever we are doing the ijja or execution of devotional service, it starts with the sankalpa. It starts with what? संकल्प। Unless we take sankalpa, we cannot do any devotional service. क्या समझ में आया? संकल्प क्या होता है? प्रॉमिस कि मैं ये परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो देखो, जब इलैबोरेट संकल्प होता है उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। उसमें होता है संवत्सर। क्या होता है? रिपीट करो मेरे सामने, पीछे बोलो, संवत्सर। फिर आयन, यानी कि उत्तरायण है या दक्षिणायन है। ऋतु, फिर संक्रांत, कौन से भास्कर, यानी कि जो भास्कर है वो कौन से राशि में है? सन, सूर्य, भास्कर
तू तो मवस्या का तो काला है सूर्य है। हमारा चांद 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 चढ़ा। मैं भी खा लगी हूँ। मैं भी कृष्ण भी खा ले। हाँ शाम हुआ है ना। एनीवे तो कहाँ पे थे बेबी और हाँ उसके बाद देन ऋतु होगी। उसके बाद फिर 5 चीजें हैं जो बहुत एसेंशियल है। तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण। क्या बोला? तिथि वार नक्षत्र कर्ण। कर्ण कर्ण। तो जब भी कभी whenever we taking a संकल्प हरि ओम तत्सत इट इज सिंप्लीफाइड संकल्प। श्री गोविंद गोविंद गोविंदो अष्टायाम शुभ तिथो श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम नित्य सेवा कर्माहम करिष्ये। क्या संकल्प दे दे। अब इसका जो इलैबोरेट होता है वो ऐसे होता है कि हरि ओम तत्सत श्री गोविंद गोविंद गोविंदो अद्य ब्राह्मणो द्वितीय अपराधे श्वेतवरः कल्पे वैवस्थाक्य मन्वन्तरे अष्टविंशति कलियुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशतो वर्तमानायाम। उसके बाद सप्तत्रिंशत् अधिकम पंचशत गौराम संवत्सरे रवि दक्षिणायने। हाँ ये शरद ऋतु आशे हाँ आषाढ़ अश्विन मासे शुक्ल पक्षे। ठीक है अश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथो बाहर क्या है? बाहर क्या है? मंगलवार रान्वितायाम। ठीक है और नक्षत्र क्या है? अनुराधा नक्षत्र संयुक्तायाम। फिर उसके बाद ये हो गया सारा। ठीक है अब इसे योग भी हो सकता है कि प्रीति योगे और तैतिल करने। ठीक है ये हो गया। अब इसका जम्बू द्वीपे भारत खंडे मेदिभूतस्य सुमेरो लौड़ा सोत्रे कोने यमुनाय दक्षिणे भागे श्री श्री वृंदारण्यम भक्ति वेदांत गुरुकुले। हाँ शिक्षा केंद्रे विग्रह सेवा अर्चन कक्षा तथा ज्ञान आदान प्रदान कर्माहम करिष्ये। संकल्प का होता है कि मैं इस जगह इस स्थान पर इस समय और उसके बाद इस ऋतु में इस महीने इस दिन इस काल में इस योग में इस कर्ण में करते 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 जम्बू द्वीप में पूरे सृष्टि में भारत खंड में। ये भारत खंड है इट्स नॉट इंडिया। भारत इंडिया द एंटायर वर्ल्ड इज भारत खंड। भारत खंडे। ठीक है मेदिभूतस्य सुमेरो लौड़ा सूत्रे कोने। ठीक है और यमुनाय दक्षिणे भागे। हम यमुना के दक्षिण में है ना। अगर यमुना पूर्व की तरफ जा रही है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया तो यमुनाय दक्षिणे भागे। ठीक है श्री श्री गुरु गोरांग राधा कृष्णा प्रीति अर्थम वृंदारण्यम भक्ति वेदांत गुरुकुल। हाँ अंतरराष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा केंद्र श्री विग्रह सेवा। हाँ कक्षा या ज्ञान प्रदान आदान प्रदान कर्माहम करिष्ये। अगर मान लो लंदन में सब कुछ करें तो ये भारत खंड है। भारत खंड ही होगा लेकिन उसके बाद फिर बताना पड़ेगा। हाँ फिनलैंड में भी नाम लिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम भी होगा नाम। ठीक है ठीक है यही बोल। इसमें देखिए अब हम लोग मैं चाहूँ तो आप भी शुरू कर सकता हूँ उसके बाद। लेकिन अगर उसके बाद मैंने आज शुरू किया
तो कल का फ्लो टूट जाएगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस। regarding this. Tell me. But the lesson that you have learned, so these are- you know, Mother Nisha is the action. ऐसा नहीं है। Mother Nisha is Bhagwan is- तो मैंने बोला कि जैसे अगर राधा कृष्ण जी की सारे ड्रेसेस लगे हुई है ना, तो जैसे कृष्ण की माला ऐसे जा रही है, तो राधा रानी की माला इस तरफ भी जा सकती है। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण की माला यहाँ जा रही है, राधा रानी की माला यहाँ जा रही है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि आज कृष्ण बना की माला ऐसे जा रही है, राइट? इट डिपेंड्स। जैसे कि आपने बोला था कि जो स्मृति देते हैं उन्हें माला ऐसे बनानी चाहिए, ठीक है, ऐसे बनानी चाहिए। बट अगर सही बट पुरानी आज एक स्मृति है उसके इसमें राधा श्याम सुंदर जी छोटे दीदी है उसके एक फोटो दिखा तो श्याम श्याम सुंदर की फोटो है वो तरीके का हमारा कहाँ है वो फोटोग्राफ? नीचे मेरे घर लिखा हूँ फटाफट, इमीडिएटली नजरिया जल्दी जा बेटा देगा। क्रीम कलर की ड्रेस है ना, क्रीम कलर की ड्रेस है, बोले पिक्चर लेके आ। तो पीछे देखो। अभी ठीक है, क्लास की बात, वो जो पर्टिकुलर ड्रेस है वो राधा, वो आइंदापुर की ड्रेसिंग थी और वो राधा लक्ष्मी की ड्रेसिंग थी। और फिर एक बार उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण सेट की तरह माला को दिखाया कि भगवान कृष्ण की त्रिभुवन की फॉर्म तो उस माला के अंदर ढंग से नहीं आ रही। मुझे पता ना तुम क्या कह रहे हो। हाँ, सब कुछ इधर ही है भाई इस दुनिया में। ये देखो मतलब हम किसी भी व्यक्ति के विशेष में किसी की भी ड्रेसिंग में फॉल्ट नहीं ढूंढ रहे हैं। दिस इज अब दिस पर्टिकुलर तरीका ये बहुत बहुत पुराने लग रहे हैं अभी, है ना। नहीं बता रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हो, हाँ हाँ राधा श्याम सुंदर ये वृंदावन हाँ, ये है तो चीज बहुत सुंदर, लाल लाली। तो ऊपर से बना दिया। मतलब ऐसे पहनाया ना, तो उन्होंने क्या पहनाया कि ऐसे पहना दिया है ना। दिस इज नॉट द वे नॉर्मली। हम लोग किसी में गलती नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब देखो जैसे ये है राधा श्याम सुंदर, आप देख रहे हो। ये ड्रेसिंग देख रहे हो आप? हाँ, ये कैसे हाथों से ड्रेसिंग आ रहा है। अब देखो ये हमारी ड्रेसिंग, आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर ड्रेस के अंदर किस तरीके की ड्रेसिंग करी गई है। देख रहे हो आप, ये कैसे जा रहा है यहाँ पे माला, ये ऐसे। मैं समझ गया वो हो सकता है किसी ने कर दिया हो, बट दिस इज नॉट द वे वैसे। अब देखो ये वाली ड्रेसिंग जो है बहुत स्लो है, ऐसा कैसे हो सकता है स्लो? 20 सेकंड का गैप आता है ना, 20 सेकंड का गैप आता है। ठीक है, देखिए क्या है ऐसे माला नहीं है ना, रावण की थोड़ी माला नहीं, ठीक है, फुल नहीं कम पड़ेगा, ठीक है।
अब कुछ कह नहीं सकते इसमें। अगर गलत सही बोला ही नहीं है। ये देखो, अभी देखो इसमें कितने ठीक है मनी तीन सौ मणिपुर की डिग्री है। देखो ये अब मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। जब हम ड्रेसिंग कर रहे हैं dीदी से, तो उन्होंने कितने साइंटिफिक माला पहनाई है, ठीक है। हालांकि ड्रेसिंग ड्रेस जो है कितनी अनईजी ड्रेस है एक तरीके से श्रृंगार के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे माला अलग है, हाथ से निकलती हुई जा रही है, इससे यहाँ पे जा रही है। ये जो माला हाथ की है ये यहाँ पे जा रही है। ये लिस्ट में लिखा है जब बनाई जाएगी ना सुपारी महाराज के सुपारी महाराज के नाम से नहीं होगी ठीक है। जैसे अब देखो ये क्या है ना, मैंने इसमें देखी जब फर्स्ट टाइम मालूम लेकिन सर तो कुछ ड्रेस ना ये ड्रेस देखना, ये ड्रेसिंग है बहुत ही स्पेशल ड्रेसिंग। Now you get the clarity. Look, ये exact way of dressing. ऐसे करना है, इसलिए किसी ने बोला ऐसे भी। अब देखो हमारा भी भाषण नहीं है। अच्छा, इन दोनों माला के पीछे गैप बराबर है, नहीं गैप है, जब तीन माला है तो ये दोनों माला इसमें किस तरह से चलते हैं? ये देखो ये माला, ये कह रहे हैं छोटा है, ये उल्ला खतरा है, इसका ये माला है, ये माला है, ये माला है। ये तो आप पहनने वाले पे डिपेंड करता है, बट बहुत ज्यादा लोग वही ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे बराबर बराबर गैप है। अगर आप मेरी कल की ड्रेस देखोगे यू सी कि उसमें जितनी मालाएं थी उस सब में बराबर बराबर गैप। माला हाँ, हाथ में एक माला होती है ना, अलग अलग तरीके से उन्होंने करते हैं, ठीक है। वो कृष्ण को प्रणाम हो जाते हैं। उस फोटो में माला हाथ वाले के माला जब जिसमें मुझे नाम बोला क्या सही बनाने Can you see this? उस वाली में माला अंदर की तरफ थी, जो बोला माला बाहर की तरफ है। मैंने तो निशाने की दिशा में बताया वो बात करना एक्चुअली में कुछ ड्रेसिंग होती है तो बहुत स्पेशल होती है ना। बट एनीवेज सारी ड्रेसिंग अलग होती है, वहाँ का अपना भाव है। एवरी डे he gets ready the way he wants to get ready, ठीक है। and every day everyone they have a different bhav, huh? They have a different bhav, right? And every pujari they do the worship according to their own understanding, ठीक है। Any question, any doubt? माला को लेकर साइड आउट किए लोग हैं। शिक्षा शिक्षा जो नहीं मानी जाती, आप मूत्र त्याग कर रहे हो तब नहीं बांधी जाती, या फिर जब आपको घर में किसी की मृत्यु हो जाती तब त्याग।
आते टाइम अब जिसकी नहीं है वो कोई बात नहीं, क्या कर सकता है, लेकिन हमेशा शिखा बांध के रखनी चाहिए। और बांध नहीं सकते एटलीस्ट रबड़ से बांध लो, रबड़ से नहीं बांध सकते तो एटलीस्ट खोलने किसने बोला खोलने? अच्छा मेरा कभी सुना नहीं। वही रात तक मैं सोचता हूँ खोलने के लिए। ये खोलनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए होता है कि जैसे आपको डिस्टर्बेंस ना हो रही है। अगर आपके बाल ऐसे भी इतना बड़े बड़े ज्यादा बाल नहीं है, छोटी सी शिकायत क्या करोगे? बहुत सारे शिक्षा के रूल्स होते हैं, कोपिंग के बहुत रूल्स होते हैं। एक साल बताऊंगा अगली बार क्लास में। ब्राह्मण में ये होता है ना कि शिखा वैसे छोटा नहीं किया जाता कभी। बाल काटने का एक ही दिन होता है महीने में, वो होते पूर्णिमा। ब्राह्मण सेट करने का भी एक ही दिन होता है पूर्णिमा। पता नहीं हम लोग एकादशी में क्यों करते हैं, केवल पूर्णिमा के दिन ही ब्राह्मण सेट चेंज होता है। जब आप किसी के मरे पे जाते हो तो आप अपने कंधे से उतार के ब्राह्मण सेट को दूसरे कंधे पे डाल देते हो। वो पूरा रिचुअल अटेंड करने के बाद आफ्टर टेकिंग शावर यू अगेन चेंज बैक योर ब्राह्मण सेट एंड दैट्स इट। ऐसी कथा आती है कि एक साधु थे, वो जा रहे थे, जाते जाते जंगल में उनका ब्राह्मण सेट अटका, वो टूट गया, वो वहीं खड़े हो गए, खड़े हो गए। शाम हो गई, घर वाले परेशान, आई नहीं आई नहीं आई नहीं। अगले दिन सुबह तक परेशान कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब बच्चे बच्चे ढूंढने के लिए निकले, जंगल के रास्ते से आते हैं पिताजी, तो जंगल वंगल के जानवर तो नहीं खा गया। देखा तो पिताजी थे वहां पे पसीना पसीना हो रखे हैं, खड़े खड़े। बोला क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे कैसे खड़े हुए हो? तो जनेऊ लेकर आओ। तो जनेऊ नहीं पहनूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत सारी चीजों के बहुत सारे रूल्स हैं, क्या क्या बताऊंगा, क्या क्या करोगे यार। ओम बोल के बांध दिया करो शिखा को। That's it. कुछ लोग काम ऐसे ही बोलते हैं। क्या ठीक है? Whatever decision we had, we pray to Radha Shyam, Gauranga, Krishna, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Ananta Koti Vaishnava, to give us the blessings that we can always remain situated in Sadhu as a servant of Krishna and worship the divine couple with our mind, body, and word, and attain the goal of life, that is Radha Dasyam. Vancha kalpatru Vaishya Kripa